Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another very important and very interesting topic, that is carbohydrates. So let's move to the classboard. So carbohydrates. Another very important topic as far as the long questions are concerned, as far as short questions are concerned, and MCQs. Clear? So from every aspect, it is very important topic as well as our daily life is concerned. ठीक है? तो मीठा, शुगर, इसके बगैर मज़ा ही क्या है? तो दैट इज़ बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है? इट्स द डेफिनेशन. क्लियर? So chemically, carbohydrates are polyhydroxy aldehyde or ketones or complex substances which upon hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde or ketone subunits. Clear? So that is basically its chemical definition. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं. So chemically, carbohydrates are polyhydroxy. So what is meant by polyhydroxy? So dear students, poly means many and hydroxy means the hydroxyl group. Here, the OH group, the alcoholic group. Aldehydes, polyhydroxy aldehydes. So aldehydes ऐसे compounds को कहते हैं जिनके साथ लगा होता है aldehyde group. So that is aldehyde group, C double bond OH. Clear? या इसको हम simply CHO लिखते हैं. So that is a functional group. Or ketones. ठीक है? Ketones इस तरह से C double bond O, carbonyl group. Or complex substances, या इससे भी complex हो सकते हैं. Which upon hydrolysis, जब इनका hydrolysis हो, तो do you remember we have learnt before what is hydrolysis? Dear students, what is hydrolysis? So hopefully you are
You are understanding the concept. So hydrolysis, it is the breakdown of large molecules or macromolecules into smaller molecules in the presence of water. तो पानी की मौजूदगी में जब कोई केमिकल सब्सटेंस टूटता है आमतौर पर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. तो जब इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का हाइड्रोलिसिस होगा, सो दे यील्ड का मतलब है टू प्रोड्यूस. ये क्या चीज बनाएंगे, इनसे क्या हासिल होगा? द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स. तो इनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन सब यूनिट्स मिलेंगे जिससे मिलकर ये बने थे. क्लियर? सो दैट इज इट्स केमिकल डेफिनेशन. आगे चलकर कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करूंगा तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा. सो if we talk about its literal meaning, the word carbohydrate carbohydrate it is carbo and hydrate. Clear? Literally means hydrated carbons. So it is important regarding MCQs as well as the short questions. What is the literal meaning of carbohydrates? या MCQs में पूछा जा सकता है. तो ये वर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है इसका लिटरल का मतलब होता है लफ्सी मानी. इसका जो लफ्सी मफहूम है, जो मानी है, दैट इज हाइड्रेटेड कार्बन्स. हाइड्रे, सो इट इज वाटर. सो हाइड्रा मीन्स वाटर. हाइड्रेट का मतलब पानी, जिसके अंदर पानी हो. एंड कार्बन्स, सो कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, सो दैट इज सी ओवर हियर. तो ऐसी कार्बन्स जिसके साथ हाइड्रा मीन्स के दे आर हाइड्रेटेड, उनके साथ पानी मौजूद हो, उनको कहा जाता है. ये इसका लिटरल मीनिंग है. हाइड्रेटेड कार्बन्स, ऐसी कार्बन्स जिनके अंदर पानी मौजूद है. सो दैट आर द कार्बोहाइड्रेट्स. क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस their occurrence, then we will move on. So as far as their occurrence is concerned, the carbohydrates occur abundantly in nature. So कुदरत के जो मामलात है उसमें देखा जाए कुदरती तौर पर, तो one of the most abundant organic compounds, the carbohydrates. अगर हम बात करें the cellulose आगे चलकर इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. इट इज अ पॉलीसेक्राइड. ठीक है, पॉलीसेक्राइड बहुत सारे मोनोसेक्राइड सब यूनिट से मिलकर बनता है. सो इट्स अ पॉलीसेक्राइड ऑफ द सेलुलोज ऑफ वुड, जो कि लकड़ के अंदर मौजूद है, ऑफ पेपर एंड कॉटन, कॉटन कपास. ठीक है, तो वहाँ पर सेलुलोज आपको पता है, याद होगा, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा हुआ डियर स्टूडेंट्स. एंड आगे चलकर हम चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करेंगे सेल वॉल के अंदर. तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, द प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो दुनिया में चूंकि सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो किसकी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेड काउंटिंग, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट्स होती हैं. क्लियर? सो प्लांट सेल है तो उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल हर प्लांट में मौजूद है. सो दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. क्लियर? एंड the starches of tubers and cereals
and milk sugar and lactose, which is milk sugar, and the cane sugar, तो कहाँ कहाँ पर ये मौजूद नहीं है? So are the examples of carbohydrates. So the carbohydrates are present in every organism, हर कोई भी living organism है, in every organism and in almost every part of a cell. तकरीबन सेल के तमाम हिस्सों में यह मौजूद होता है. Clear? The carbohydrates. And if we talk about their sources, the source of carbohydrates are, तो कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पर इनका सिंथेसिस होती है स्टूडेंट्स? So you hopefully know that are plants. Plants are the sources of carbohydrates, and they form it by they synthesize carbohydrates. कौन से प्रोसेस से डियर स्टूडेंट्स? सो कौन से प्रोसेस से सिंथेसिस होती है इनकी कार्बोहाइड्रेट्स? बाय फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के जरिए इनको बनाया जाता है. चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स, डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको. नाउ if we talk about the general formula, general formula of carbohydrates is the general formula of carbohydrates is CH2O Y. So that is the general formula where this X is a whole number starting from 3 to many thousands, depending upon the size of the carbohydrate. Clear? लेकिन इसकी मिनिमम लिमिट याद रखनी है. जो कम से कम नंबर है कार्बन का जो शुगर होने के लिए, यानी जो टू बी अ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज 3. ये MCQs के लिए याद रखना है. ठीक है? सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ शुगर आर 3. तो ये आगे चलकर क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस करेंगे. सबसे सिंपलेस्ट शुगर्स, द ग्लिसरॉल्डिहाइड and the dihydroxyacetone, which are the intermediates of respiration and photosynthesis. तो मोनोसैकेराइड्स में इसको डिस्कस करेंगे ट्रायोसिस के अंदर. ठीक है? इनको हम ट्रायोसिस भी कहते हैं. ट्रायोसिस which are monosaccharides. तो इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे.
One thing more, dear students, that the ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrates is same as in water. तो जो वाटर के अंदर रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, सेम एज इट इज ऑन एन एवरेज इन ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, इन ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स इज सेम. जैसे कि लेट अस हैव एन एग्जांपल. सो इन केस ऑफ वाटर, सो वाटर दैट इज H2O, तो कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन? तो यहां पर अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, इट इज 2:1, 2 हाइड्रोजन to 1 ऑक्सीजन. So now let's have an example of sugar. तो सबसे सादा शुगर आप कौन सी जानते हैं स्टूडेंट? बहुत आसान सी. किस शुगर का नाम सुना आपने? कौन से कार्बोहाइड्रेट जो आप, जी, सो दैट इज ग्लूकोज. तो सबसे यहां से सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं. Glucose. So what is its formula? C6H12O6. Clear? तो हमने यहाँ पर रेशियो किसकी लेनी है? हम किसकी रेशियो की बात कर रहे हैं जो कि वाटर के इक्वल है? सो दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओवर हियर. तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन आर देयर. तो इसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करें इन द रेशियो फॉर्म, सो 6 1 6 एंड 6 2 12. तो यहाँ पर क्या रेशियो बनेगी? 2:1. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, 6 1 6 एंड 6 2 12. इसी तरह से तो ये बेसिकली एक मोनोसैकेराइड है. ग्लूकोज क्या? इट इज अ मोनोसैकेराइड. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक डाइसैकेराइड की. लेट्स टॉक अबाउट सुक्रोज. ये आगे चलकर हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे. सुक्रोज को हम वी ऑल्सो कॉल इट एज द केन शुगर. द केन शुगर, ठीक है, इट इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड. तो डाइसैकेराइड डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है ऐसी शुगर्स को जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने. सो इसका जो फॉर्मूला है, इट्स फॉर्मूला इज C12H22O11, ठीक है, O11. तो here is hydrogen and oxygen. So 11 1s are 11 and 11 2s are 22. तो यहाँ पर भी क्या रेशियो है डियर स्टूडेंट्स? 2:1. So it is correct. So almost in all carbohydrates, in all carbohydrates, the ratio of hydrogen to oxygen is same as in the water. जैसा कि पानी के अंदर होती है. तो पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1, ग्लूकोज 2:1, फ्रक्टोज 2:1, गैलेक्टोज 2:1. इस तरह से डाइसैकेराइड्स में अगर देखेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन, so it is 2:1. So it is maintained approximately. Now there is another important thing, that is the conjugated molecules. Conjugated molecules. So as far as conjugated, ये इस चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक भी मौजूद है अलहदा से, उसमें भी डिस्कशन होगी इसके हवाले से. तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वन दे गेट केमिकली बाइंड विद ईच अदर, दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. सो द कार्बोहाइड्रेट्स combine
with lipids and proteins in a cell to form glycolipids and glycoproteins. Glycolipids and glycoproteins respectively. मीन्स कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ बाउंड होंगे तो दे विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स. जब ये प्रोटीन्स के साथ बाउंड होंगे दे विल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट मोस्ट सेलुलर सेक्रेशंस इन सेल्स में जो सेक्रेशंस बनती हैं लाइक एंजाइम्स और अदर थिंग्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर. ज़्यादातर सेक्रेशंस क्या होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर. और डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स they have structural role. They play structural role in the building of the different structures in the animals and plants and other prokaryotes and fungi, etc. Like आपने पढ़ा हुआ है that the glycolipids and the glycoproteins are present in plasma membrane. They are present in plasma membrane. तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में इसको भी मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. So they also have functional role. They also have got functional role. So as far as functional role is concerned, they store energy and they are the instant source of energy. हमें जैसे भूख लगती है हम फौरी तौर पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो हमें उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फौरी तौर पर हमारी एनर्जी बहाल हो जाती है. क्लियर? और इसी तरह से दे ऑल्सो आर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस फंक्शनल, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर they have got functions. ठीक है? They are the secretions. So cellular secretions, they have got functional roles. So dear students, आपने देखा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स और हमारे सेल्स के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं which are made up of carbohydrates, either in free form or either in conjugated form. So hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.